दुर्योधन के मेवे तज के साग विदुर का खाया। शिवरी के झूठे बेरों से प्यारे तुमने मजा उठाया। दुर्योधन के मेवे तज के साग विदुर का खाया। केवल दास नहीं हूँ सतगुरु, मैं दासों का दास तुम्हारे, मैं दासों का दास तुम्हारे। जैसे सबकी लाज रखी है मेरी भी लाज रखाना, मेरी भी लाज रखाना। मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घर आना, गुरु कृपाल मेरे घर आना। जैसे तुम सावन दीवाने। कैसे तुम्हें बुलाऊं सतगुरु, पता नहीं है ज्ञान नहीं। किसी तरह का कोई तो खबर मेरे बस की बात नहीं। कैसे तुम्हें बुलाऊं सतगुरु, पता नहीं है ज्ञान नहीं। किसी तरह का कोई तो खबर मेरे बस की बात नहीं। पल पल के दर्शन को गुरुजी प्यासी आंखें तरस रही हैं, प्यासी आंखें तरस रही हैं। यही बेनती है अजायब की, मुझे नहीं तड़पाना, मुझे नहीं तड़पाना। मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घर आना, गुरु कृपाल मेरे घर आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना।
इमरान साहब की तस्वीर है। इमरान साहब की खेल है बुजुर्ग आदमी। अच्छा, बहुत अच्छा है। देखो वही पंजाब की कहावत है, कोई बरात सी वो कहते भावे 1000 आदमी आ पर कोई बुढ़ा रहे ठीक है। वो जेडे गांव वाले सी वो समझ गए भी आके कोई राज है, जेडे कहने बुढ़ा ने लिया उन्होंने बुढ़ा ट्रक च बंद कर लिया। कोई उन्होंने क्योंकि पिछले जमाने अंदर बरात के अंदर कोई अडोनी पाते सी, कोई इस तरह का खेल होया तो हम जो नौजवान से उसका खा लिया बह गए, कोई फिक्रता नहीं सी। तो उसका उन्होंने कोई पता नहीं, वो कहते भी खाना फिर ही खा सकते। फिर बाबे ने जाके पूछा तो पूछे बाबा अडोनी है, खाना फिर ही खा सकते हैं, उन्हें बताया। ठीक है, तो बुढ़े मैंने प्यारे बच्चों नहीं करता खुलेआम रखा हुआ है बुला।
Now Russell Perkins will tell you a story. This is a story that Sanchi has told about a king who was out walking one night and he fell into a company of robbers. And it turned out that they were going to rob the palace. He didn't know what to do, so he went along with it. And the robbers, each of them were explaining what their special talent was that made them good robbers. One man could understand the language of the animals. Another robber had the ability to recognize by day anyone he saw at night. Another one was very strong. He could make holes in cement walls very easily. Another one had a sense of smell. He could always smell gold. So he knew wherever the gold was, he could go there. So they all had talents like that. Anyway, they were going to the palace, and the king realized they were going to rob the palace. He felt very strange, but he went with them anyway. And each one used his talent, and they were able to get into the palace, found the gold, and they stole it. And as they left, the king managed to sort of disappear. And as soon as he got away from them, he told the police that they had done this, and the police arrested him. The next morning, the king had told them also that his talent, because they did not know that he was a king, was that because they wouldn't let him into the gang if they didn't know what his talent was, if he didn't have one. He told them that his talent was that if he wagged his beard in a certain way, that he could save someone from being hanged. So they thought that was a very useful talent. Very happy to have it with them. Anyway, the next morning, the king went to the police station. There they all were. And the one he could recognize by day, the person, whoever it was he saw at night, instantly recognized him and said, "This is the man who could wag his beard and save us from the executioner." And he fell at his feet and said, "Please save us." So the king agreed. Moved his beard, nodded his head so that they let him go. And they were all saved. And that's the story. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The children's satsang was very good.
children give me a lot of happiness. Whatever the children do over here at this time, they do it in their innocence. They are above the duality. They do not have any enmity. They do not have any jealousy. Instead of that, if we had grown-up people here, we would have noticed that how they would be jealous of each other and how they would be reacting. But since the children are very innocent, they do not have any duality, they are not involved in being jealous. So that is why whatever they do here gives me a lot of peace. The heart of the saint is also like the heart of the I hope that after the satsang, the children will go and sit quietly with the satsang. Poor ones, we have kept our hopes on you. You yourself protect our souls. Sawan Guru Kirpal Ji Date Din Dayal Ji Asira Kiya Sateriya Ruha Apni Aap Sambhal Ji Sawan Guru Kirpal Ji Date Din Dayal Ji Asira Kiya Sateriya Ruha Apni Aap Sambhal Ji
I have written the letters and I am sending them to Sawan. Oh beloved, do not delay. Please come at once. You are a resident of the Anami. You come to my home, you come to my country. The month of Sawan has come and the friends have erected the swings. Your remembrance is bothering me. Oh, my beloved, come home. Do not delay. Every day, I am hoping for you. I am waiting for you. Even in the orchards, the mangoes have ripened. This is a very joyous weather. Oh, dear one, oh, beloved, bring the happiness. Do not delay. When in the sky the clouds are full of the rain, and when the cuckoo birds sing the song, the friends are swinging on the tree of the people. Oh beloved, come and you also give me a swing. Do not delay. Today from the sky it is raining, but my beloved one is far away from me. Again, the spring has come. Oh, my beloved, you also come. Do not delay. My anklet is singing. May someone come and unlock the mysteries of my heart. Oh, beloved, listen to the melodious song of the anklet of Ajab. Do not delay. I write the letters and send to Sawan. लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ सावन नू पावां देर न लायड़िया अनामी देश वसेंदे वतनी आयड़िया लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ सावन नू पावां देर न लायड़िया अनामी देश वसेंदे वतनी आयड़िया अज सौण महीने आए वे सखियां ने पींगे पाए वे अज सौण महीने आए वे सखियां ने पींगे पाए वे मैनू तेरी याद सतावे तू कर आयड़िया वे देर न लायड़िया लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ सावन नू पावां देर न लायड़िया अनामी देश वसेंदे वतनी आयड़िया मैं रोज उड़ीकां रखियां वे बागां विच अंबियां पक्कियां वे मैं रोज उड़ीकां रखियां वे बागां विच अंबियां पक्कियां वे अज मौसम रंग रंगीले खुशी ले आयड़िया वे देर न लायड़िया लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ, लिख चिट्ठियाँ सावन नू पावां देर न लायड़िया अनामी देश वसेंदे वतनी आयड़िया जदों बदल रिम झिम लाए वे
उदों गीत कोयल ने गाए वे जदों बदल रिम झिम लाए वे उदों गीत कोयल ने गाए वे पिपली पींगा पाया याड़ चुटायड़िया वे देर न लायड़िया लिख चिट्ठियाँ लिख चिट्ठियाँ लिख चिट्ठियाँ सावण नू पावा देर न लायड़िया अनामी देश वसेंदे वतनी आयड़िया अजे अंबर बरसे पानी वे मेरा दूर वसेंदा हानी वे अजे अंबर बरसे पानी वे मेरा दूर वसेंदा हानी वे अज फेर बहार आया तू भी आयड़िया न देर न लायड़िया लिख चिट्ठियाँ लिख चिट्ठियाँ लिख चिट्ठियाँ सावण नू पावा देर न लायड़िया अनामी देश वसेंदे वतनी आयड़िया मेरी चांजर क्षण क्षण बोले वे कोई भेद दिला दे खोले वे मेरी चांजर क्षण क्षण बोले वे कोई भेद दिला दे खोले वे अजैब दी चांजर दा क्षण काटा सुनदा जायड़िया वे देर न लायड़िया लिख चिट्ठियाँ लिख चिट्ठियाँ लिख चिट्ठियाँ सावण नू पावा देर न लाड़िया अनामी देश वसेंदे वतनी आयड़िया संगत दातू है राखा जी
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I bow down at the feet of God Savan and Kripal, who, showering limitless grace upon us, has given us this opportunity to sit together in their remembrance. It is only because of their grace that we are sitting here and are practicing to connect ourselves with them. ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾವನ್ ಮತ್ತು ಕೃಪಾಲ್ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ದಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಗುರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಇದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಮೌಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಬಾಜಿಯವರು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಸುಮರನದಲ್ಲೇ ಕೂಡಬೇಕು. हाँ अभ्यास से बैठने तो पहला चाहे यहाँ बैठो या घर अंदर जाके बैठो, सब तो पहला मन नूं ये दस दिओ कि हुण असीं खास एक काम वास्ते बैठते हैं, ये तू दखल ना दे, जवाब दे के बैठो। मन दे नाल संघर्ष करना ही अभ्यास है। उस तो बाद 5 पवित्र नामां नूं अच्छी तरह हौली हौली ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰੋ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਚਾਰੋ। Before sitting in the meditation, whether it is here or at your homes, tell your mind that now you are going to sit for a very important work and he should not bother you. And then you should repeat the 5 words of the Simran, 5 holy words of the Simran slowly with your tongue. When you do not find any difficulty in repeating the words with your tongue, then do it mentally. Tell your mind that this is a very important work and he should not disturb you. To struggle with the mind is meditation. ಬಾಬಾಜಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲೇ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣ ನಡಿಬೇಕು. ನಾಮಸ್ಮರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಜಬಾನ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತದೆ. ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਝਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Never understand meditation a burden. Do it lovingly. The work which we do lovingly, we become successful in it. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತೂಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಇದು ನಾವು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದೇ ಬಾಬಾಜಿಯವ್ರದ್ದು ಇದ್ದದ್ದು. ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਜੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। I am very pleased to be sitting with you in the meditation every day. I never go away after making you sit in the meditation. I feel the happiness, I feel the same happiness sitting with you in the meditation which I got on the very first day when I became receptacle of the grace when Master Kripal first made me sit in the meditation. ಬಾಬಾಜಿಯವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗೋತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਪੀਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪੀ ਕੇ ਪਪੀਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਣਕਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। So it is the ambrosial hour. Guru Nanak Sahib had said that when the rain bird is looking for the swathi drop, he calls for that drop, and Lord Almighty, God Almighty orders Lord Indra, who is the god of rain, to shower the rain on this earth. So when God Almighty hears the plea, hears the cry of the rain bird, he orders Lord Indra, and in that way that papiha, that rain bird, removes his thirst, he gets that swathi drop. In the same way, the meditation which we do here, the simran which we do here, is like calling, just like making the plea at the home of Lord, in the court of Lord. So just like God Almighty listens to and responds to the call and the prayer of the rain bird, he also listens to our call, he also responds to our call. But since we do not reach the place where he is responding to our call, where he is responding to our simran, that is why we do not have the knowledge that how he is showering grace upon us. The saints and Mahatmas, those who go within after doing the meditation, those who reach that place, they know that how God Almighty is listening to our every single word and how he is responding, and he is showering grace upon us. ಬಾಬಾಜಿಯವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರು ನಾನಕ್ ದೇವ್ರ ಬಾಣಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಚಾತ್ರಕ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಟನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಥ ಪಶು ಪಕ್ಷಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಮಾನವ್ರ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಧ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವನಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರಗಟವಾಗಿ ಆವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ರಹಸ್ಯ, ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆ ಎಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਾਹਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। So all of you now start doing your meditation, closing your eyes. Do not think and don't open your eyes until you are asked to open the eyes. Some dear ones think that their friends have left while they are still sitting here. No, dear ones, it is not the case. You will be told to open your eyes and they will also sing a bhajan. So until you are asked to leave off, continue doing your meditation. Please close your eyes and start meditating. ಅದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ತನಕ ಅವರು ಬಾಣಿ ಹೇಳೋತಿಲ್ಲ, ರಾಧಾಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋತಿಲ್ಲ, ಆ ತನಕ ನೀವು ಕಣ್ಣು ತೆರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾಸ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಣಿ ಓದೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಧ್ಯಾಸ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಧಾಸ್ವಾಮಿ अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। ना कर बंदे मेरी मेरी दमदा की परवासा। ना कर बंदे मेरी मेरी दमदा की परवासा। जीवन तेरा ऐसे जैसे पानी विच पतासा।
अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। ना कर बंदे खुदी तकबर सिर पे मौत निमाणी। ना कर बंदे खुदी तकबर सिर पे मौत निमाणी। एक दिन पगले ऐसा आवे तू डूबे बिन पानी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी। माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी। एक दिन पगले ऐसा आवे माटी में मिल जाना जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। जब तक तेल दीप में बाती जगमग जगमग हो रही। जब तक तेल दीप में बाती जगमग जगमग हो रही। जल गया तेल निकुट गई बाती लाशियों को तोड़ लई। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। पाटा चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी। पाटा चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी। दिल का महरम कोई न मिलया सब मतलब के गर्जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। कृपाल गुरु सदा मन बादिया तो मोर दियो। तुसी अर्ज सुनो कृपाल गुरु सदा मन बादिया तो मोर दियो। मन सत संगत विच ओंद नहीं बादिया करनो शर्मांद नहीं। मन सत संगत विच ओंद नहीं बादिया करनो शर्मांद नहीं। कारो तरस जीवाते दयाल प्रभु कारो तरस जीवाते दयाल प्रभु।
चित गुरु चरना विच जोर दियो तुसी अर्ज सुनो किरपाल गुरु सदा मन बादिया तो मोर दियो तुसी अर्ज सुनो किरपाल गुरु सदा मन बादिया तो मोर दियो आसी जन्म जन्म दे रोगिया कामी क्रोधी कपटी बोगिया आसी जन्म जन्म दे रोगिया कामी क्रोधी कपटी बोगिया तेरी आत्मा तू ही संभाल गुरु तेरी आत्मा तू ही संभाल गुरु सदा मन दा परदा तोर दियो तुसी अर्ज सुनो किरपाल गुरु सदा मन बादिया तो मोर दियो तुसी अर्ज सुनो किरपाल गुरु सदा मन बादिया तो मोर दियो संत
ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਤੂੰ ਬਾਮੇ ਸਾਵਨ ਬਾਮੇ ਦਾਤਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਗਤ ਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਹੈ ਅਮਰ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਦਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਲੋਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਪਾਣੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣੇਗਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਤਨਾਕਰ ਰਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਤਨਾਕਰ ਰਾਓ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣੇਗਾ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ स्वामी जी नो तार दिता स्वामी जी ने जयमल सिंह नो नाम दे बेड़े चाड़ दिता तुलसी साहिब नाम दे रसीए स्वामी जी नो तार दिता स्वामी जी ने जयमल सिंह नो नाम दे बेड़े चाड़ दिता जयमल सिंह दा सावण प्यारा जयमल सिंह दा सावण प्यारा दूध चो पानी छानेगा जिस ते मेहर हो जाए तेरी तैनो ही पछानेगा तेरी कुदरत तू ही जाने और न दूजा जानेगा जिस ते मेहर हो जाए तेरी तैनो ही पछानेगा
बिठाया माली है, नाम दा किरपाल प्यारा संगत दाओ वाली है। सावन सोना बाग लगाया, विच बिठाया माली है, नाम दा किरपाल प्यारा संगत दाओ वाली है। सुनियो अर्ज गरीब जैब दी, सुनियो अर्ज गरीब जैब दी, रखे मान निमाने दा, जिस ते मेरे हो जाए तेरी तैनो ही पहचानेगा। तेरी कुदरत तू ही जाने, हो न दूजा जानेगा, जिस ते मेरे हो जाए। आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद करते हुए ये एक आखिरी अनाउंसमेंट है। जो भी प्रेमी भाई बहन बम्बई या बम्बई के आसपास रहते हैं और सत्संग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए हर महीने के दूसरे रविवार को शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जिस जगह पर बाबा जी आके ठहरे थे वहाँ पर सत्संग होता है। तो जो भी प्रेमी भाई बहन आना चाहें उस सत्संग में उनका स्वागत है। इसके अलावा हर इतवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक श्री दामू सिंकर जी के यहाँ कांदीवली में पार्क एवेन्यू बिल्डिंग में ए विंग में 101 नंबर में सत्संग होगा। तो जो भी भाई बहन आना चाहें उन सब का इस सत्संग के अंदर स्वागत है। एड्रेस के लिए आप सुबोध शिंकर या दामू शिंकर से एड्रेस वाले कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा बाबा जी की तरफ से आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि कोई भी प्रेमी एयरपोर्ट जाने का प्रयत्न ना करे। अगर आपने अभी जाना है, आपकी फ़्लाइट है तो बात अलग है, बाकी सिर्फ दर्शनों के लिए वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि एक एक करके काफ़ी भीड़ हो जाती है और ये ठीक नहीं है। All of you are requested not to make any efforts to follow Sanji to the airport. This is very important. आप सभी भाई बहन यहाँ पर इसी तरह से बैठे रहें और बाबा जी के बाहर जाने के बाद में ही कृपा करके यहाँ से उठें। All of you are requested to please remain seated here. Do not leave this hall until Babaji's car has left this hall.
Thank you.